इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में जो हमारी अर्थ है, ऐसी गोल अर्थ है हमारी, बन जाएगा हाँ। तो ऐसी अर्थ जो है, तो ये जो आउटर जो है उसे क्रस्ट बोलते हैं। फिर ये मैंटल है, फिर मैंटल के बाद कोर है, और ये इनमें जो लेयर है वो इसमें डिसकंटिन्यूटीज़ भी होती है, जैसे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग। तो ये सब साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तो ये सारे जो हमने सुना है कि अर्थ के सेंटर में एकदम मैग्मा होता है, हॉट लावा, तो ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला? इसमें कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कौन से लेयर में क्या होता है, क्या डेंसिटी होती है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो शुरू करते हैं हम। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ, what do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a thick cover of rock that is lithosphere? यानी तुम अर्थ को कैसे इमेजिन करते हो? एक सॉलिड बॉल जो होती है, सॉलिड बॉल मतलब जो एक होता है रबर का बॉल आता था जिसमें अंदर बस हवा भरी होती थी, वैसे या पूरा ऐसा भरा हुआ, तो आप अर्थ को कैसे इमेजिन करते हो? Have you ever seen the photograph or image of volcanic eruption on television screen? Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire, and the magma flowing out of volcanic crater? The interior of the earth can be understood only by indirect evidence, as has a- any neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. The exogenic as well as endogenic process are constantly shaping the landscape. तो यही है कि जो अर्थ को एंडोजेनिक मतलब जो अंदर से जो आ रहे हैं एंडोजेनिक, और एक्सोजेनिक मतलब बाहर, जो ये वर्ड है एक्सो एंडो, इस पे हमें फोकस करना है। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effect of endogenic process are ignored. The is largely influenced human life is largely influenced by the physiography of the region. Therefore, it is necessary that one get acquainted with the forces that influence the लैंडस्केप डेवलपमेंट। जो एंडोजेनिक अंदर के जो है उससे हमें हमेशा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर हम अब मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अर्थक्वेक आ गया, मर गए, तो इससे वजह से जो सारे देशों की सरकार होती है उस पर एक डिपार्टमेंट होता है जो स्टडी करता है सिस्मिक वेव्स और ये सब, ताकि अलर्ट रहे जहाँ पे कन्वर्जिंग प्लेट्स है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक और हाउ सुनामी वेव्स इज जनरेटेड, it is necessary that we know certain details of interior of the earth. In the previous chapter, have you noted that the earth forming material have been distributed in the form of layers, forming the forming form from the form. In the previous chapter, you have noted that the earth forming material have been distributed in the form of layers,
from the crust to the core. It, it is interesting to know how scientists have gathered information about these layers and what are the characteristics of each of these layers. This is exactly what this chapter deals with. जैसे मैंने बताया कि दो है, एक तो डायरेक्ट सोर्सेस होता है, एक डायरेक्ट सोर्स है और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स में जो हमें सीधा गड्ढा सीधा अर्थ के अंदर जाके सब पता करना है, और इनडायरेक्ट मतलब जैसे ग्रेविटी कहाँ पे कितना है, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म या अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स फॉर्म होते हैं तो उस सब को स्टडी करना है, इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे जब हम एक्चुअली में नहीं जा रहे लेकिन अंदाज़ा लग सकता है तो उसे the sources of information about the interior. The Earth's radius is about 6,378 kilometers. No one can reach the center of the Earth and make observation or collect samples of the material. Under such conditions, you may wonder how scientists tells us about the Earth's interior and the type of material that exist at such depths. Most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimate and inference, yet a part of the observation is obtained through direct observation and analysis of the material. The direct source, the most easily available solid earth material is the surface rock. The most easily available solid earth material is surface rocks or the rocks we get from mining areas. The gold mines in South Africa are as deep as 3 to 4 kilometers. Going beyond this depth is not possible as it is very hot at the depth. Besides mining, scientists have taken up number of projects to penetrate a deeper depth to explore the condition in the crustal portion. World over the scientists world over are working on two major projects such as deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project. The deepest drill at Kola in Arctic Ocean has so far reached a depth of 12 km. This and many deep drilling projects have provided a large number of information through analysis of material collected at different depths. The volcanic eruption forms another uh, forms another source of obtaining direct information. As and when the molten magma is thrown onto the surface of the earth during volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis. However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma. Indirect sources. An analysis of the properties of matter indirectly provides information about the interior. We know through the mining activities that the temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in the deeper depth. It is also known that the ins moreover it is also known that the density of the material also increases with depth. It is possible to find the rate of change of these characteristics. Knowing all the knowing all the total thickness knowing the total thickness of the earth, the scientists have estimated the value of temperature, pressure, and the density of different depth.
The details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed in this chapter. Another source of information are meteors. At the time, at meteor that at times reaches the earth. However, it may be noted that the material that becomes available for the analysis from meteor is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. They are solid bodies developed out of the material same or similar to our planet. Hence, this become yet another source of information about द इंटीरियर ऑफ द मीटियोर को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मीटियोर जो है जब बिग बैंग हुआ था और यूनिवर्स फॉर्म हुई तो जो अर्थ जिस मटेरियल से फॉर्म हुआ है वही उसमें वही वो मटेरियल भी इससे ही फॉर्म हुआ होगा और जब वो पास आता है तो बहुत डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो टूट जाता है, तो फिर बहुत छोटे छोटे ऐसे उसके टुकड़े हैं, तो उस पर हम डीप स्टडी करके एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है. द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड्स द ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक एक्टिविटी. द gravitation force is not the same as different the gravitational force is not the same at different latitudes on the surface. It is greater near the poles and less in less at equator. This is because of the distance from the center at the equator being greater than that the poles. तो हमारी अर्थ जो है जियॉइड शेप की है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे वो ज़्यादा ये लगता है, इसके वजह से इसका जो रेडियस है वो थोड़ा कम है, इसका जो डिफरेंस है वो 0.3 वो आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी. द अनइवन The gravity values also differ according to the mass of material. The uneven distribution of mass of material within the earth influence this value. The reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. These readings differ from the expected values. Such difference is called gravity anomaly. The gravity anomaly gives us an information about the distribution of mass of material in the crust of the earth. The magnetic survey also provides uh, information about the magnetic survey also provides information about the distribution of magnetic material in crustal portion and thus provides information about the distribution of material in the parts. Seismic activity is one of the most important information information about the information about the interior of the earth. Earthquake. The study of seismic waves provides a complete picture of the layered interior. And earthquake in a simple words is a shaking of the earth. It is natural event. It is caused due to release of energy which generate waves travel in all direction. The release of the energy occurs along the fault. A fault is a sharp break in the crustal rock. The rocks along a fault tend to move in opposite direction as the overlaying rock press them. The friction lock them together. However, their tendency to move part at some point time overcomes the friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slides past one another abruptly. This causes a release of energy, and the energy waves travel in all direction. At the point where the energy is released is called the focus of an earthquake. Alternatively, it is called as hypocenter. The energy waves traveling in different direction reaches the surface. The point on the surface nearest is
The point on the surface nearest to focus is called epicenter. तो ऐसी अर्थ है, यहाँ पे अगर भूकंप या फिर अर्थक्वेक हुआ तो इसे हम जो है ये कहते हैं हाइपोसेंटर या फिर हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहते हैं। तो ये जो है फोकस या फिर हाइपोसेंटर है, और जब वेव्स यहाँ पे पहुँचती है तो इसे एपिसेंटर कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट यहाँ पे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। The earthquake waves, the all natural waves takes place in all natural earthquakes takes place all natural earthquake takes place in all natural earthquake takes place in the lithosphere. You will learn about the different layers of the earth later in this chapter. This is sufficient to note here that the lithosphere to the portion of the depth is 200 kilometers from the surface of the earth. The instrument called seismograph graph records the waves reaching the surface. A curve of the curve of earth The curve of earthquake waves recorded on the seismograph is given in 3.1. Note that the curve shows three distinct sections, each representing different type of waves pattern. The earthquake are basically of two types: body waves, surface waves. The body waves are generated due to release of energy at focus and moves in all direction, traveling through the body of the earth. Hence they are called body waves. the bo- the body waves interact with the surface, generate new set of waves called surface waves. These waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through material with different densities. The denser the material, higher the velocity. Their direction also changes as they reflect or refract when coming across the material with different densities. तो ये जो है ये बॉडी वेव्स है, ये अर्थ के जो इस यहाँ पे भूकंप हुआ, यहाँ पे फॉल्ट ये सब हुआ प्रेशर की वजह से, और ये जब यहाँ पे जाएगी तो ये जो होगा तो ये सरफेस वेव होगा। नेम्स सिंपली जैसे है कि सरफेस वेव्स, ये बॉडी वेव्स। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडी वेव्स कॉल्ड एज पी एंड एस waves. P waves move faster and are the first to arrive at the surface. These are called primary waves. तो जो पहली वेव हिट करती है उसे प्राइमरी कहते हैं। The P waves are similar to sound waves. They travel through gaseous, liquid, solid. S waves arrived at the surface with with some type of lag. These are called secondary waves. An important fact about S waves is that they can travel through solid material. This characteristics This characteristics of S wave is quite important. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth. The reflection causes waves to rebound, whereas the refraction makes waves to move in different direction. The variation in the direction
The variation in the direction of waves are inferred with the help of their record on seismograph. The surface waves are the last to report on a seismograph. These waves are more destructive. They cause displacement of the rock, hence collapse the structures and occurs. Propagation of the waves. Different types of earthquake travels in different manner. As they move or propagate, they cause vibration in the body of rocks through which they passes. The P waves vibrate in parallel to the direction of waves. This exert pressure on the material in the direction of the propagation. As a result, it creates a density differences in the material, leading to the stretching and squeezing of the material. The other three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation. The direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in vertical plane. Hence, they create through create troughs and crest in the material through which they passes. The surface waves are considered to be most damaging waves. तो दो प्रकार के वेव्स होते हैं, एक होता है सरफेस वेव्स और एक होता है कि बॉडी वेव्स. तो सरफेस वेव्स जो सरफेस पहले जो बॉडी वेव्स आती है, पहले पी वेव आता है, फिर एस वेव आता है, फिर ये जो है बॉडी वेव्स जो होते सरफेस वेव्स में वो होते सरफेस वेव्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग विल्डिंग सबको ये करते हैं और इस वजह से वो ज़्यादा डैमेज करते हैं. और जो पी वेव्स है वो पैरेलल होती है, जिसका मतलब ऐसे 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 होती है, और जो एस वेव्स है वो ऐसे होती है. Emergence of shadow zone. The earthquake waves get recorded in seismographs located at far off the location, where however they, there exists some specific area where the waves are not reported. Such zones are called shadow zone. The study of different events reveals that for each earthquake, there's the study of different events reveals that for each earthquake there exist an altogether different shadow zones. Figure 2 point, ये ये जो है ये पी वेव्स है, ये ऐसे जो है वो सब जा रही है. तो ये जो लिक्विड है, जो कोर जो होता है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड में है, फिर भी यहाँ से ट्रैवल कर लिए. लेकिन अगर हम देखोगे यहाँ पे ये जो है यहाँ से ट्रैवल नहीं कर रही क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है. तो ये जो है यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए इसे शैडो जोन कहते हैं. और ये पी वाला शैडो जोन है. It is observed
It is observed that seismographs located at any distance within 105 from epicenter recorded the arrival of P and S wave. However, the seismograph located beyond 140 from epicenter recorded the arrival of P waves, but not thus the zone between 105 and 125 from the epicenter are identified as shadow zone for both the type of waves. The entire zone between 105 does not receive the entire zone between 105 does not receive S waves. The shadow zone of S waves is the shadow zone of S waves is much larger than that of P waves. The shadow zone of P appears as a band around the earth between 105 and 145 away from the epicenter. The shadow zone of S waves is not only larger in extent but it is also little. The shadow zone of S waves is not only larger in extent but also a little over 40% of the earth's surface. You can draw the shadow zone of earthquake that the provided you know the location of epicenter. The types of earthquake, the most common ones are tectonic earthquake. These are generated due to sliding of rocks along the fault. A special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. However, these are confined to the areas of active volcanoes. In the areas of intense mining activities, sometimes the roof of underground collapse causing minor tremor. These are called collapse earthquake. The cause ground shaking may also occur due to the explosion of nuclear or chemical. Such tremors tremors are called explosive. The different type of earthquake. The earthquake that occurs in the areas of large reservoirs are referred as reservoir induced earthquake. Measuring the earthquake. The earthquake events are scaled either according to the magnitude or intensity of shock. The magnitude scale, also known as Richter scale, the magnitude relates to the energy released during the quake. The magnitude is expressed in 0 to 10. The intensity scale is named after Mercalli, the Italian seismologist. The intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is from 1 to 12. The effects of earthquake. The earthquake is a natural hazard. Following are the immediate hazardous effect. जो ground shake होता है, differential grounds and settlement, land and mudslide, soil liquefaction, ground lurching, avalanches, ground displacement, floods from dams and levee failures, fires, structural collapse, falling objects, tsunami. The first six listed above have some bearing upon landforms, while other may be considered the effect causing immediate concern to the life and properties of people in the region. The effect of tsunami
would occur only if the epicenter of tremor is below oceanic water and the magnitude is sufficiently high. The effect of tsunami would occur only if epicenter of tremor is below the oceanic water and the magnitude is sufficiently high. The tsunamis are the waves generated by the tremor and not an earthquake in itself. Though the actual quake activity lasts for a few seconds, its effects are devastating and provided that magnitude of the quake is more than 5 on Richter. Frequency of earthquake occurrence. The earthquake is natural hazard. If a tremor is of high magnitude takes place, it can cause a heavy damage to the life and property of the people. However, not all part of the globe necessarily experience the major shocks. We shall be discussing the distribution of earthquake and volcanoes. Some details in the next chapter. Note that the quake of high magnitude, that is 8 plus, is quite rare. They occur once in 1 to 2 years, whereas those of tiny types occurs almost every minute. Structure of the earth. The crust, the outermost solid part of the earth. It is brittle in nature. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. The oceanic crust is thinner as compared to the continental crust. The mean thickness of ocean crust is 5 kilometer, whereas the continental is 30. The continental crust is thicker in the areas of major mountains such as, तो ये अर्थ है, तो अर्थ में यहाँ पे लैंड होता है, यहाँ पे ओशन होता है. तो ये जो है ये थिकर है, थिनर है, यहाँ पे ओशन है सपोज. तो ये बता रहे. Mantle, the portion of the interior beyond the crust is called mantle. The mantle extends from the Mohs discontinuity to the depth of 2900 kilometers. The upper portion of the mantle is called as asthenosphere. The word astheno means we. It is considered to be extending up to 400 kilometers. It is the main source of magma. The portion of the interior beyond the crust is called mantle. Mantle extends from Mohs discontinuity to the depth of 2900 kilometers. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. The astheno means we. It is considered to be extending up to 400 kilometers. Is the main source of magma. तो ये क्रस्ट है. तो यहाँ पे अगर पानी होगा तो ये ओशनिक क्रस्ट है. अगर माउंटेन या फिर ज़मीन होगी तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ये लिथोस्फीयर होता है जिसमें थोड़ा अपर पार्ट ऑफ सॉलिड मेंटल भी होता है. और ये मेंटल में ना ऐसे लावा बहता है थोड़ा सा 400 किलोमीटर तक. तो उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं जो सेमी सॉलिड होता है. सेमी सॉलिड मतलब वो ऐसा जेली टाइप होता है सेमी सॉलिड. तो ये स्टेनोस्फीयर है. Its way to the surface during volcanic eruption.
The crust and the uppermost part of mantle is called lithosphere. Its thickness ranges from 10 to 200 kilometers. The lower mantle extend beyond the asthenosphere. It is in solid state, the core. As indicated earlier, the earthquake waves velocities helped in understanding the existence of the core of the earth. The core mantle boundaries is located at the depth of 2900 kilometers. The outer core is in liquid state while the inner core is in solid state. The core is made up of heavy metals and mostly constituted constituted by iron and nickel, and it's sometimes referred as Nephi layer. तो तीन जो थे, एक कोर होता है जो सबसे सेंटर में होता है, उसके नीचे जो इनर कोर है, फिर ये आउटर कोर है. आउटर कोर जो है वो लिक्विड में है और ये जो इनर कोर जो है वो सॉलिड में. ये लिक्विड में है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ती, तो ये हीट इतनी होती है कि ये पूरा मेल्टेड होता है. और ये प्रीमोर्डियल जो हीट थी वो भी ट्रैप है. इसकी वजह से जो है न्यूक्लियर रिएक्शन भी चल रही है, इस वजह से ये है. लेकिन जब कोर सॉलिड है, क्योंकि कोर जो है उसमें प्रेशर लग रहा है. प्रेशर तो यहाँ पे भी है लेकिन इतना नहीं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत हाई डेंसिटी. तो ये volcanoes and volcanic landforms. You may have seen the photographs or picture of volcanoes on a number of occasions. A volcano is a place where gases, ashes, or molten rock material lava escapes to the ground. A volcano is called an active volcano if the material mentioned are being released. A volcano is called as active volcano if the material mentioned are being released or have been released out in recent past. The layers below the solid crust is mantle. It has higher density than of the crust. The mantle contains the weak zone called asthenosphere. We it it is the form of molten rocks material find their way to the surface. The material in the upper mantle portion is called mega. Once it start moving towards the crust or reaches the surface is referred to as lava. The material that reaches the ground includes लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डायवर्स. ये जो है ये आया था इसमें यूपीएससी का पीवाईक्यू है. तो क्या क्या आता है ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिज. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है गैस करने को, क्योंकि पायरोक्लास्टिक मतलब हमें ज़रा प्लास्टिक वाला फील आता है. इस वजह से हम ये गैस नहीं कर पाते कि ये सच में था या नहीं. तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है. Volcanic bombs, ash, dust, gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds, minor amounts of chlorine, hydrogen, and argon. Volcanoes. The volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and forms developed at the surface. The shield volcano, bearing the basalt flow. The shield volcano are the largest of all volcanoes. Hawaiian volcanoes are the most famous example. These volcanoes are mainly of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, they are very explosive and not steep. They become explosive if somehow water gets into the vent. Otherwise, they are characteristics by low explosivity. The upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out of the cone at the top of the vent, develops the
cinder cone. Composite volcano. These volcanoes are characterized by the eruption of cooler and more viscous lavas than basalt. These volcanoes often result in explosive eruption. Along with the lava, large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity uh, of the vent opening, leading to the formation of layers, and this makes the mount appear like composite volcano. Caldera. These are the most explosive of earth volcanoes. They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapse depression is called calderas. Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but in close vicinity. Flood basalt lava. These volcanoes outpour highly liquid lava that flows for long distance. Some these volcanoes outpour highly fluid lava. This lava that flows for long distance. Some part of world are covered by thousands of square kilometer thick basalt lava flow. There can be the series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 meter. The individual flows may extend for hundreds of kilometers. The trap from Deccan trap from Deccan traps from India, presently covering most of the Maharashtrian plateau, are much larger filled basalt province. It is believed that initially the trap formation occurred at much larger area than present. Mid-oceanic ridges volcanoes. These volcanoes occur in the oceanic areas. There is a system of mid-oceanic ridges more than 70,000 km long that stretches through all ocean bases. The central portion of ridges experiences frequent eruption. We shall be discussing this in the detail in the next chapter. Volcanic landforms. The lava is released during volcanic eruption. On the cooling develops the igneous rocks. The cooling may takes place either on reaching the surface or while the lava is still in the crustal portion. Depending on the location of the cooling of lava, igneous rock are classified as volcanic rocks cooling at the surface, the plutonic rocks cooling in the crust. The lava that cools within the crustal portions assumes different from these forms are called as intrusive forms. There are some forms shown in figure. Batholiths, a body of a large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develop in the form of large dome. They appear on the surface only after denudation processes remove the overlying material. They cover the large
areas and at times assume depth that may be several kilometers. These are called as granitic bodies. Batholiths are the cool portion of magma chamber. Laccolith. These are large dome-shaped intrusive bodies with the level base and connect. These are the large dome-shaped intrusive bodies with the level base and connected by the pipe-like conductive from the below. It resembles the surface volcano domes of composite volcano. Only these are located at the deeper depth. It can be regarded as the localized source of lava that finds its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rock. Most of these now exfoliated are the example of laccolith or batholith. Lapolith, patholith, and sills. As when the lava moves upward, a portion of some may tend to move in horizontal direction where it finds a weak plane. It may be rested in different forms. In case in case it develops into saucer shape, a concave to the uh, sky body, it is called lapolith. A wave mass of intrusive rocks at time is found at the base of syncline or top anticline in folded igneous rocks. Such wavy materials have been definite inductive beneath to in the form of magma chamber, subsequently developed as batholiths. These are called as batholiths. The near horizontal bodies of intrusive igneous rock are called sills or sheets, depending on the thickness of material. The thinner ones are called sheets, while the thicker horizontal deposits are called sills, dikes. When the lava makes its way through cracks and fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It get cools in the same position, developed wall-like structure. The structure is called dikes. It These are most commonly found intrusive form in western Maharashtrian area. These are considered the feeders of eruption that led टू द डेवलपमेंट ऑफ डेकन ट्रैप्स. तो ये पूरा जो चैप्टर था उसे मैं थोड़ा समराइज वे से जो है वो बता देता हूँ. ये इस पे हम बता देता हूँ मैं तुम्हें. तो अर्थ जो है ये हमारी अर्थ है. तो अर्थ का जो कंपोजिशन है, जो आउटर मोस्ट है, तो इसका जो हमें एक टुकड़ा ऐसा है जो निकाल लेते हैं. तो अगर हम एक ऐसा पीस अगर जब हम निकाल लेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट है इसे हम क्रस्ट कहते हैं. तो ये जो क्रस्ट है वो लेस देन
1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम फॉर्म करता है, जो बहुत पास में है ऐसे अर्थ के। और फिर जब है उसके नीचे जो है वो मैंटल है, तो मैंटल यहाँ पे बिलो द अर्थ 84% जो है अर्थ का कंपोजिशन फॉर्म करता है, और कोर जो है 15% फॉर्म करता है। जो थिकनेस जो है 5 to 70 किलोमीटर्स है, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ जगह जैसे ओशनिक है, ओशनिक क्रस्ट थोड़ी सी थिन होती है, बाकी जब अगर माउंटेन हो कॉन्टिनेंट पे तो 70 किलोमीटर्स तक भी जा सकती है। उनकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.7 है। मेंटल जो है, जो यहाँ से जब क्रस्ट ख़त्म होता है तो वहाँ से लेके 2900 किलोमीटर्स होती है। और आप देख सकते हैं कि डेंसिटी अब इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। तो जहाँ पे मेंटल ख़त्म होता है 2900, तो वहाँ से सेंटर तक जो है वो कोर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो कंपोजिशन जो है कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो लाइटर रॉक से बना हुआ है, जिसका नाम है सियाल। सियाल मतलब जो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। और ओशनिक क्रस्ट जो सीमा से बना हुआ है, सीमा मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ये डेंस होते हैं, ये लाइटर रॉक होते हैं। मेंटल जो है वो सीमा से बना हुआ है, सीमा मतलब फिर से वही है सिलिका और मैग्नीशियम। कोर जो है वो निफे से बना हुआ है, निफे मतलब निकेल और आयन। क्रस्ट है जो वो सॉलिड है। अपर मेंटल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में, जो जेली लाइक, यहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट है। और जो लोअर मेंटल है, जो मतलब एस्थेनोस्फीयर से नीचे और आउटर कोर से ऊपर, वो सॉलिड में। और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में, वह इनर, क्योंकि वहाँ पे प्रीमोर्डियल हीट और वो सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिथोस्फीयर क्रस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सॉलिड पार्ट अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर भी स्टार्ट होता है, लेकिन वो नहीं, सॉलिड पार्ट जो 200 किलोमीटर तक है। एस्थेनोस्फीयर जो है सेमी सॉलिड लेयर ऑफ, मतलब ऐसे लिक्विड नहीं होता, वो जेली लाइक हो सकता है। मेसोस्फीयर जो मेंटल, जो लोअर मेंटल बिलो एस्थेनोस्फीयर, पहले था लिथोस्फीयर जो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर था, उसे एस्थेनोस्फीयर। लेकिन जो लोअर मेंटल जो एस्थेनोस्फीयर और आउटर कोर के बीच में, उसे और बैरोस्फीयर जो है वो आउटर और इनर कोर को कंसिडर करता है। जो होल अर्थ एलिमेंट है वो IOS से बनी हुई है। और IOS एप्पल ध्यान में रखना, अर्थ भी गोल होता है और ऐसे निकला हुआ, उसका मून निकला हुआ है, तो उसे एप्पल IOS ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और क्रस्ट जो है वो OSIF ऐसे याद रख सकते हैं। अर्थक्वेक, जो जहाँ पे अर्थक्वेक की वेव जनरेट हुई तो उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। जैसे अर्थ है, यहाँ पे हुआ तो इससे हम हाइपोसेंटर या फोकस कहेंगे। यहाँ से सिस्मिक वेव्स जनरेट होगी ऐसे। और इपीसेंटर जो है, जो सबसे पहले अगर यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे इपीसेंटर होगा वहाँ उसका, जो सबसे पहले सिस्मोग्राफ जो है, जो यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफी। रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स ऑब्जर्व करने के लिए। फिर मरकरी स्केल है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है एक इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स है। सिस्मिक वेव्स दो हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जो ये अंदर से आ रही है तो ये इसे बॉडी वेव्स कहते हैं, और जो ऐसे
ये जब हिट करेगा तो यहाँ पे भी ऐसी एक वेव आएगी, तो उसे सरफेस वेव्स करेंगे। बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स दे आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज एट फोकस, मतलब जो पॉइंट है मेन ये वाला, यहाँ पे बॉडी वेव्स है। दे आर जनरेटेड व्हेन द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक। ये जब सरफेस पे आया तो इसने ऐसे स्टार्ट किया, ये सरफेस वेव्स है। तो ये दो टाइप के बॉडी वेव्स होते हैं, एक पी वेव्स और एक वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जो पहले आएंगी वो प्राइमरी, जो सेकेंडरी सेकेंड और सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स जो है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। पी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में भी ट्रैवल करती है। ये वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ सीस्मिक वेव्स है। लेस डिस्ट्रक्टिव एंड देन एस वेव्स है। ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स है, देयरफॉर दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड, कैन पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल सॉलिड लिक्विड और गैसेस, सब में। ये सब में नहीं ट्रैवल कर सकती, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। और ये जो साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स होती है उसकी तरह दिखती है, वैसे ये लाइट वेव्स और वाटर रिपल्स की तरह होती है। जैसे बॉडी वेव्स भी दो टाइप की थी, पी वेव्स और एस वेव्स। जैसे सरफेस वेव भी लव वेव्स और रेलेग वेव्स में डिफरेंशिएट होती है। तो ये जब शैडो जोन होता है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे ऐसे जाएंगी, तो फिर ऐसे 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 जाएंगी। ये रिफ्रैक्ट हो रही है वेव्स। अगर तुमने कोई पानी है, पानी की टंकी है और उसमें पाइप डाल दिया तो पाइप ऐसा बेंड होता है, तो ये रिफ्रैक्शन की डेंसिटीज डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा ये होता है। लेकिन जब पी वेव्स जो है वो सॉलिड लिक्विड गैसेस सब में ट्रैवल करती है, लेकिन एस वेव्स जो है वो सब में ट्रैवल नहीं करती। जो जब कोर आता है तो ऐसे ऐसे यहाँ से ही बाहर चली जाती है। तो इस वजह से जो है वो इसका जो शैडो जोन है वो बहुत बड़ा होता है, और कुछ जगह पे पी वेव्स का शैडो जोन भी बनता है जो छोटा होता है एज कम्पेयर टू एस केव्स। और ये कॉन्ट्रास्ट डिसकंटिन्यूटी, डेंसिटी और मटेरियल के हिसाब से हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के इससे बना हुआ है। सबसे जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, तो वो जो है वो कॉन्ट्रास्ट डिसकंटिन्यूटी, मतलब क्रस्ट है और क्रस्ट में भी एक अपर क्रस्ट है और एक लोअर क्रस्ट है। और फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, तो ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो है उसमें जो है वो मोहरक डिसकंटिन्यूटी है। और फिर ये फिर रेपिटी जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, तो उसमें रेपिटी है। गुटेनबर्ग जो है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर की वजह से। ये लेमन, जैसे मैं इससे बता देता हूँ, ये एक स्लाइस हमने निकाल लिया, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इसमें जो है वो कॉन्ट्राड है। जब लोअर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट है, और अपर मेंटल इसमें जो है मोहरक है, और ये मेंटल मेंटल के बीच में ये मोहरक जो है वो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर भी है। लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर पे शुरू होता है, तो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को भी ये बोलते हैं। ग्यूटेनबर्ग जो है वो मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और कोर जो है, जैसे हमने को पता है कि आउटर कोर जो है लिक्विड में, इनर कोर सॉलिड है, तो आउटर कोर जब लिक्विड में तो लेमन और बुलेंडिस्टिनिटी भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये कॉन्ट्राड है, फिर ये मोहरिक है, रेप्टी है, मेंटल मेंटल के बीच में, फिर कोर कोर के बीच में ये, लेकिन कोर और मेंटल के बीच में ग्यूटेनबर्ग है। तो ये चैप्टर शायद ख़त्म हो गया है।
ये लव्स वेव और ये रेलेग वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स, तो ये हमें डिफरेंस समझना चाहिए, क्योंकि ई वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और एस वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स है, ये जो है वो एस वेव्स है, और ये पैरेलल है एक दूसरे के, जो आपको दिख रहा है ना, ये पैरेलल है। और ये जो है परपेंडिकुलर है, देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये ऐसे धक्का देगा, फिर ये सपोज ये ग्राउंड है, फिर ऐसे धक्का देगा, फिर ये है, ये धक्का, ये धक्का धक्का धक्का, लेकिन ये ऐसे परपेंडिकुलर लिए, ये इसमें ये स्लोअर है, ये एक स्लोअर वेव्स है, एक फास्टर है। इसमें मेन डिफरेंस तुमको बस ये याद रखना है, एक सॉलिड है मीडियम से, और एक जो है वो तीनों से भी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कि पी वेव्स है जो फास्टेस्ट बॉडी वेव्स है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है। ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि पी वेव्स मुझे लगा सबसे पहले पहुंचती है, तो बहुत ताकत है, जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है, तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होंगी, लेकिन ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है समाओ। और ये थोड़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो सरफेस वेव्स है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सरफेस पे चल रही है, और अगर सॉइल लूज हो या फिर कुछ हो तो बड़े जो बिल्डिंग्स है वो गिर जाते हैं, तो इस वजह से